बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिकल से रिलेटेड है और ये हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में क्या वेरिएशन है और उसके साथ साथ इसके लॉज कौन से अप्लाई होते हैं, उसके साथ इसके पैरामीटर्स कौन से हैं, कौन से टाइप्स के सॉल्यूशन हम जो है वो डेवलप करते हैं। इसमें कैलकुलेशंस भी आ जाती हैं, मोलैरिटी मोलैरिटी। एक्चुअली सॉल्यूशन से प्रीवियस हमारा मिक्सचर एक टर्म यूज की जाती है, कंपाउंड एक टर्म यूज की जाती है और सॉल्यूशन टर्म यूज की जाती है। सिर्फ हमारी टर्म्स हैं यूज हम करते हैं। जैसा कि मिक्सचर जो है केमिकल कॉम्बिनेशन है टू और मोर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंबाइन केमिकली, ठीक है, but remain the same individual substances can be separated by physical means. That should be called as mixture. अब कंपाउंड जो टर्म यूज की जाती है, कंपाउंड एक्चुअली बाय अगर टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस अगर केमिकली कंबाइन हो जाएंगी तो उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो कंपाउंड टर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर केमिकली कंबाइन नहीं हो रही है फिर हम उसके लिए मिक्सचर भी टर्म यूज कर रहे होते हैं। फर्दर हम उसके लिए आगे फिर सॉल्यूशन के भी पैरामीटर को निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ हमारे जो है मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि मिक्सचर में हेटेरोजेनियस भी आ जाती है और होमोजेनियस टाइप भी आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट फेजेस एंड सेम फेजेस, जैसे कि हेटेरोजेनियस फेजेस हम ये कहते हैं कि हमारे डिफरेंट फेजेस हैं। सपोज एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, इस तरह के अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है या कंपोनेंट्स अलग अलग नजर आ रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस फेज। और जो होमोजेनियस फेज है इससे हम ये कहते हैं कि ये ओवरऑल हमें एक ही फेज नजर आ रही होती है, या तो वो लिक्विड होता है या फिर वो सॉलिड होता है या फिर क्या होता है गैस होता है। तो ओवरऑल अगर एक ही फेज नजर आ रही है फिर हम उसके लिए होमोजेनियस फेज या मिक्सचर हम कह रहे होते हैं। और मोस्टली ये जो होमोजेनियस होते हैं कॉमनली दीस आर रेफर्ड एज सॉल्यूशंस। अगर हेटेरोजेनियस है तो फिर हम उनको सॉल्यूशंस नहीं कह रहे होते, लेकिन अगर होमोजेनाइज हो जाएंगे then that is called mixed, that is called solution, ठीक है। तो ये हमारी कंपोजिशन आ जाती है जो कि सेम फेज में हम सॉल्यूशन और मिक्सचर में फर्क कर रहे होते हैं। अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है कि हमारे पास इसमें हम कंबाइन करते हैं टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस और ओवरऑल वो होमोजेनाइज हो जाते हैं और इस मेथड से हम फिजिकली उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो कंपोनेंट्स जो होते हैं सॉल्यूट्स होते हैं और उसके अलावा सॉल्वेंट्स होते हैं। सॉल्यूट्स बीइंग डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो रहे होते हैं, और जो सॉल्वेंट्स हैं दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट्स, ठीक है। तो इस एंगल में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ऐसी चीज जो डिसॉल्व हो रही हो दैट इज सॉल्यूट और जो डिसॉल्व कर रही हो दैट इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है। जब हम उन्हें आपस में ऐड करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तो हमारे पास ओवरऑल एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारी वेरिएशंस हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि हमारा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा होता है और सॉल्वेंट हमारा डिसॉल्व कर रहा होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दो चीजें जब हम यूज कर रहे हैं उनमें डिसॉल्व कौन हो रहा है और डिसॉल्व कौन कर रहा है, कौन हो रहा है और कौन कर रहा है। अगर इस तरह के हम वेरिएशन में आते हैं तो फिर हमें तो नहीं समझ, जब भी हम दो कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे वी कांट से व्हिच कंपोनेंट इज डिसॉल्व एंड व्हिच वन इज गोइंग टू बी डिसॉल्व। ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम एक बेसिक लेवल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सॉल्वेंट ऐसे कंपोनेंट को कहेंगे उनमें व्हिच इज लार्जेस्ट इन अमाउंट, तो सॉल्यूट उसके लिए हम यूज करते हैं व्हिच इज स्मॉलेस्ट इन अमाउंट, ठीक है। तो उसके लिए हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के टर्म यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने वाटर की ज्यादा क्वांटिटी ले रही दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और अगर हम इसमें शुगर या सॉल्ट की लेस क्वांटिटी ले रही
ले ली दैट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट। ये हमारी वेरिएशन। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इक्वल अमाउंट में लेंगे, सपोज सॉल्यूट भी 1 किलोग्राम है और सॉल्वेंट भी 1 किलोग्राम है, या हमारा दोनों कंपोनेंट्स में हम एक एक लीटर है, दोनों लिक्विड है और दोनों एक एक लिक्विड है, एक एक जो है उसमें हमारा किलोग्राम है या 1 लीटर है ओवरऑल। अब अगर दोनों कंपोनेंट्स की क्वांटिटी सेम है, then how we will say which one is solvent and the other one is solute? पहला पॉइंट तो ये है कि डिसॉल्व और डिसॉल्व उसकी बेस पे भी कोई आइडिया नहीं हो रहा, और दूसरा जो पॉइंट हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट है, कम है तो फिर हमारा सॉल्यूट है। तो अगर ये अमाउंट सेम हुई तो सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा? तो मैंने शुगर ले ली, या मैंने सपोज मिल्क ले लिया 1 लीटर, और मैंने पानी ले लिया, वाटर ले लिया 1 लीटर। जब दोनों की इक्वल अमाउंट है, इक्वल वो मैस हो सकता है, इक्वल ग्राम हो सकते हैं, इक्वल लीटर हो सकते हैं, वॉल्यूम हो सकता है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो उस केस में फिर हम डेंसिटी देखते हैं। हम कहते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी दैट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट, और जिसकी डेंसिटी कम होगी दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेंसिटी पैरामीटर की बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारा सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। से मिल्क इज मोर डेंस दैट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट, वाटर इज लेस डेंस दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डेंसिटी भी कोई इतना बड़ा पैरामीटर नहीं है, डेंसिटी भी बहुत क्लोज पैरामीटर है। बहुत से सॉलिड्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी आपस में सिमिलर है, बहुत से लिक्विड्स ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी आपस में सिमिलर है। तो अगर डेंसिटी सेम होगी फिर क्या करेंगे? फिर हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा दैट विल एक्ट एज सॉल्यूट, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो इस हिसाब से हम इसको देखते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर मास भी कंपोनेंट्स का सेम होते हैं। फिर हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा दैट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट, और जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। मतलब lesser is the melting or boiling point that will act as a solvent, higher is the melting and boiling point that will act as a solute। अब melting और boiling point दो different components के similar नहीं हो सकते। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिफरेंशिएट करने के पैरामीटर, पहला तो ये था कि डिसॉल्व होना या डिसॉल्व करना। अगर उससे भी क्लियर नहीं है देन अमाउंट, लार्ज अमाउंट दैट इज सॉल्वेंट एंड लेस अमाउंट दैट इज सॉल्यूट। अगर अमाउंट का पैरामीटर भी सेम है then density, more is the density that will act as a more is the density will act as a solute, and lesser is the density will act as a solvent। अगर density clear नहीं है then molecular mass, higher is the molecular mass that will act as a solute, lesser is the molecular mass that will act as a solvent। अगर molecular mass same होगा then melting point and boiling point। अब जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं सिमिलर नहीं हो सकते, वो हमेशा डिफरेंट होगा। तो इस बेस पे हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या करें, डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, ये हमारी जो है इन केसेस में सिलेक्शन आती है कि सॉल्यूशंस क्या है और कैसे है। फर्दर अगर आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं तो गैसियस सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर आप गैसियस सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं जैसे कि एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिक्विड सॉल्यूशन में जिसमें हम जाते हैं ड्रिंक्स हैं, या सॉलिड सॉल्यूशन में हम जाते हैं जिसके अलायज हैं, स्टील है, ब्रास है, बोन्स है, ये मतलब हमारे अलायज हैं, तो उनका हम सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। गैसियस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब इन सॉल्यूशंस में जो हमारी टाइप्स हैं तो यहाँ पे ये गिवन है, सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स ऑफ द टू और मोर कंपोनेंट्स। जैसे कि ये स्टेट ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है और ये स्टेट ऑफ
सॉल्यूट और ये उनके सामने एग्जांपल। अब अगर हम देखें, if gas is a solute and gas is a solvent, then gas should be the solution. The example is air. Air में nitrogen maximum amount है that will act as a solvent. Noble gases हैं उसके traces हैं, minimum percentage है उसकी, that will act as a solute और overall air की formation है। उसके बाद हमारे जो solutions हैं वो liquid state में भी exist करते हैं, और liquid state में अगर exist करेंगे तो gas and liquid, liquid and liquid, और furthermore हम ये कहते हैं कि solid and liquid। यहाँ पे आपका जो solvent है, जो आपका solvent है वो liquid है और आपके solute change हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे solute जो change हो सकते हैं, अगर हम solute की तरफ जाते हैं, solute gas and liquid as oxygen in water, soft drinks, that is the example of the gas and liquids. Then the next one is liquid and liquid, as alcohol in water, that is also liquid and liquid, or other some liquids and which can be dissolved in water, that should be liquid and liquid solution. The next category is solid and liquid. Salt in water, sugar in water, that is basically a solid and liquid solution, and the overall solution state should also be the liquid form. In the next, there a solution state is solid, and the solvents are also solids. So इसमें जो solutes हैं, it might be gas, liquid, or solid. If gas is a solute, that should be dissolved in solid. That is the adsorption of the different gases on the surface of the metals, as palladium metal, platinum metal, nickel metal, on which hydrogen is absorbed for the hydrogenation process. So that should be gas and solid solutions. The next one is liquid and solid, that is mercury and silver. Mercury is liquid and that should be dissolved in silver, that's solid at room temperature. The last one is solid and solid, that might be different alloys, silver and gold. So that combination is called solid and solid solution. The state of the solution should also be the solid state. So next one is that इसमें mechanism क्या हो रहा होता है और इसके electrolytes की तरफ ये कैसे काम कर रहे होते हैं। तो overall जब हम substance को solute को dissolve करते हैं, it will conduct electricity. That should be the electrolyte. The component which will not conduct electricity, that will be non-conductor, as this one is non-conductor, non-electrolyte, and the next one that is weak electrolyte, and the next one is strong electrolyte. So strong electrolyte में जो production ज़्यादा है as compared to weak electrolytes and compared to non-electrolytes. Next step, formation of the solution, there are some interactions which are developed between different particles in solute and solvent particles. So these interactions are the basic reasons for the formation of the solutions in this category. इस केस में हम ये कहते हैं कि solvent pulls the solute particles apart and strong or solidates them. जैसे कि हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो NaCl इसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल उसके सॉल्वेंट। Na positive should be surrounded by liquid molecules or solvent molecules, and Cl negative should also be surrounded by the component of the molecules. As there are three types of interactions between for the formation of the solutions. As in the first step, the solvent molecules which have some attractive forces, it must be here. These attractive forces are dispersed into the different molecules in the separate molecules. The enthalpy change should be detachment. That is the first step in which liquid or solvent interactions are dissociated. And next step, solute particles are also associated with the components, as that enthalpy should be in step 2, delta H2.
And in third step, these both will interact with each other to form solution. And the solution that is enthalpy is termed as delta H. If we have to calculate the total enthalpy of the solution, then we have to add delta H1 plus delta H2 and plus delta H3 as mentioned below. Delta H of solution is equal to enthalpy first, enthalpy second, and enthalpy third. So it will favor the formation of the solutions in different directions. enthalpy चेंज कैसे होती है enthalpy चेंज कैसे होती है in first step delta H when forces are dissociated in second step solid particles are also dissociated, that is breakage of the that is a dissociation of the bond, dissociation of the inversion, and obviously during dissociation of the molecules energy is required, so it should be endothermic step. But in last step, when these ions, when these particles interact with each other to form the cell, to form the solution, there should be some stability, there should be some formation of the infection. It will release the amount of energy, so there should be exothermic as well. Furthermore, how does a solution form? Solution forms if we have to dissolve the salts, the positive and negative ions are dissociated, positive or negative, except supposing the message is positive or negative enthalpy change. It might be positive or might be negative. It depends upon nature of the components. If enthalpy of lattice, which is the last step in which different components are hydrated, last step is a hydrated step in which different ions are hydrated. During formation of the bonds, it should be the loss of the image, that should be exothermic. But during first step, there should be endothermic breakage of the bond. So overall net value should be calculated from the steps. If the sum of the steps is equal to negative, then the overall enthalpy should also be negative. If sum of the steps is positive, then overall enthalpy should also be positive. How does a solution form? Solution forms actually by interaction of the ions with water molecules. Water molecules surrounds the ion, and it will lead to the formation of the solutions as well. In next step, there is amount of concentration. It is concentration of the one solid dissolved in a solvent at given temperature of start concentration. It might be dilute, it might be concentrated, it might be saturated, it might be supersaturated, it might be unsaturated. That depends upon different conditions and different concentration. If different concentrations are used, then different type of solutions are produced. As very low amount of soluble dissolved, it should be very dilute solution. If according to the capacity, it should be saturated solution. If more than capacity soluble dissolved, it should be supersaturated solution. So these are types concentrated, and dilute has comparatively less amount of soluble, and concentrated has definitely less amount of the solute. So in concentration, there is unsaturation, saturation, and supersaturation. Solubility, the amount of solute that is dissolved in certain amount of solvent that is called solubility. It should be miscible liquids can easily dissolve in another one. Immiscible liquids are not soluble in each other. So there are miscible which can be dissolved and miscible which can't be dissolved. Why does endothermic process occurs? Actually, endothermic process, that is our schematic diagram of these compounds as that's a solute and solvent, and during solute and solvent, there should be in delta H, there is a dissociation of the forces between the solute particles, and the further solvent particles inflections are also dissociated into to components on the behalf of delta H3 should be converted into saturated solution,
And overall the net value from solute and solvent, the net value is positive. So formation of this one overall positive or endothermic step. During in this enthalpy is measured, so enthalpy is also enthalpy solution. The solution have unsaturated, saturated, and saturated. If it has less amount of solute as compared to the carbon, it should be unsaturated. If it has the amount of the solute according to the temperature, according to the requirements, so it should be saturated. If more than the capacity amount at high temperature will dissolve, then it should be supersaturated solution. So that is on the basis of concentration. Factors which can affect the solubility, that is shaking. Shaking will lead to the stability of the components. Temperature is also the main factor. During temperature, the solubility can also be controlled. Particle size, more is the particle size, more is the polarizability, and less is the particle size, less is the polarizability, so less will be the solubility. So different factors can affect the solubility of the solutes and the solvent. Increasing the amount of solute doesn't increase the rate of resolution. Actually, rate of resolution remains constant, and it should somehow in some percentage. So these factors can affect proper shaking, can also affect the solubility of the solids. As more is the shaking, then more is the solubility of the solute, and if there is less effective shaking, it should be have less effect of the temperature on it. So furthermore, other factors which can affect the solubility. Polar substances are soluble in polar solvent, and non-polar substances are soluble in non-polar solvents. Polarity nature can also affect. And the other one is intermolecular interaction. More than molecular interaction between the molecules, then there must be less solubility of the compounds. So the forces can also affect the solute and solvents. The next one is hydrogen bonding. Hydrogen bonding can also affect the solubility effect. And the last one, the vitamin A is soluble in non-polar components, but the other component did not as vitamin A is soluble in non-polar components as fats, but vitamin C should be soluble in polar. That is a schematic diagram of the vitamin C in which hydroxyl groups are present for hydrogen bonding. But in case of vitamin A, there's no attraction between the component, so no hydrophilic or hydrogen bonding are possible in the vitamin A. But vitamin C is very effective. Furthermore, temperature can also affect the solubility curves. And solubility curves is a different approach as compared to the nature of the exo and endothermic process. So these lines show by increasing temperature, the solubility of these components is also increased. As sodium nitrate from around 72 to something, it should be 35, and the CaCl2 it will start from this point and ends at around 30 temperature Celsius. So these are the temperature effects that we can discuss with solubility curves. As a frictional crystallization, is the separation of the mixture of the substance into pure component on the basis of the offering the solubilities. So they will dissolve a sample in 100 ml of control and 60 degrees Celsius. A cool solution to 0 Celsius. RNSL will stay in solution as well. And the next one is
Solubility forms pure nitric is potassium nitrate will precipitate it out. So these are the different factors. Furthermore, there are solubility of the different gases as well. So I can explain nitrogen is least soluble and propane is the highest solubility. High should be solubility. Actually, in gases in solutions, we can increase the solubility by increasing pressure of the increasing the external pressure on the components. So diaphragm forces are also very effective hydrogen are also very effective as well. Gases in a solution, so these have different solutions and different components. Further, so it's the temperature. Carbonated drinks bubble if the increase in temperature, the solubility is decreased. Actually, that is a factor temperature on gases solution. If we will increase the temperature, the solubility of this gas will be decreased. But if we decrease the temperature, then decrease the temperature, then solubility will be controlled and will rise up to some extent. Furthermore, ways of expressing the concentration of the solution. It might be mass percentage, it might be parts per million, parts per billion, mole fraction, molarity, and molarity. So these are the different factors. These are the different expressions in which gases can be explained, or other solutions can explain on the basis of this concentration units. Further, polarity and dissolving that will also affect the solubility of the components. Solubility comes in here. Generally, solubility of the solid solutes can lead to solid increasing the temperature. But there should be some difference, as here is continuous solubility curves and discontinuous solubility curves. In continuous solubility curves, these books starts from this one from 0 Celsius and it will end at any temperature from the 0 Celsius. So it might be the maximum solubility is here by curve from 5 to right now 60. So that is solubility curve. If the plot relationship between solubility and temperature, that is called solubility curve. The next one, that's also solubility curves on the basis of temperature, which can be explained. That is also same temperature as well. In case of other points, saturated solution, unsaturated, and supersaturated. So these are different basic parameters has been identified about solution. Now our target is to study about the different concentration units of the solids, and furthermore we have to find out different polarity, normality, when mole fraction, more, and when the other one is ppm, ppb, ppp parts per trillion. These are the different concepts on the field of which concentration of the solutions can calculate as. So mole fraction, what should be the mole fraction? Actually, mole fraction denoted as x. That is a ratio between the number of moles of that component to the number of moles of all the components. It is no units because ratio has no units. So mole fraction is a ratio of one component moles of the all concentration. So the molarity, the mole fraction should not be affected by the temperature or some other effect. So mole fraction is a ratio of the number of moles of one component to the number of moles of other components. Furthermore, when we study about this one,
parts per million and parts per billion. Number of moles of solute dissolved in 100 parts of the solutions. So it should be parts per million and parts per billion. Then million means 10⁻⁶ and billion means 10⁻⁹. So that parts per million category can also be calculated from different methods. As parts per million ppm is expressed into different components. Parts per billion ppb that should be parts per billion. So it should be mass of an A solution to mass of the solution. And 10⁻⁹. In case of ppm, 10⁻⁶, and in case of ppb, it should be 10⁻⁹. I will start the polarity again.